Bismillahirrahmanirrahim. All my dear students, Assalamu alaikum. This is Iftikhar Hussain from Academy of Excellence. This is a continuity of chapter number 6 and this is video 4 on artificial gravity. Before this video, we have talked about weightlessness and we have seen the 4 cases for the weightlessness when an object was moving upward, downward and free fall on an elevator. Today we will see how the astronomers are able to perform their work in a satellite. किस तरीके से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सैटेलाइट में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं जबकि वहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर हम खुद से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं. ये जो ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज़ टर्म्ड एज आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड हाउ डू वी प्रोड्यूस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ज़मीन पे देखें, ज़मीन में ग्रेविटेशन फोर्स है. ये ज़मीन की जो सरफेस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसका ये क्यों है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ज़मीन रोटेट करते करते एकदम से रुक जाए तो हम टेंजेंशियली ज़मीन से बाहर निकल जाएंगे और वी आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ऑन अर्थ वी हैव ऑन अस ज़मीन की सरफेस के ऊपर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड द ग्रेविटेशन फोर्स. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट को हम जहन में रखते हुए हम जो सैटेलाइट है उसको भी स्पिन करवाते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड बाय दैट फैक्टर वी आर गोइंग टू ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर इट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी फैक्टर. Now, in order to produce the artificial gravity in a spacecraft, the laboratory of a spacecraft is rotated with a suitable frequency about its own axis. And that is we are going to drive what is going to be the frequency for that. And the second important thing is that the rotation is so maintained that the astronaut do not feel weightlessness. The frequency of the rotation depends upon the length of the laboratory of the spacecraft. ये सी डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक स्पेस सैटेलाइट है जिसकी लेंथ L है एंड इट इज़ गोइंग टू बी रोटेटेड अराउंड इट्स ओन एक्सिस सो द रेडियस इज गोइंग टू बी L/2. Before going in detail and to derive the value, I'm going to show you something how it is going to be produced and how the artificial gravity is going to be produced in a satellite. We're going to see an example and animation. Alright, my dear students, if you see this diagram, there's an astronomer who is moving on that edge of circular track, जो कि हम लोग जब हम सैटेलाइट को रोटेट करवाएंगे तो ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होगा. There are 2 forces, Fn that is normal reaction force and Fc that is centripetal force. Though both are going to be equal, that's why it's going to move in a circular track. इसकी जो velocity, this is tangential velocity. अगर हम इसको जैसे ही रोकेंगे तो it is going to move tangentially out of that circular track. Now main essence या जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि what is the frequency of the satellite when it is going to be rotated in a circular track ताकि वहाँ पर ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जा सके. तो अब हम उसकी डेरिवेशन के लिए देखते हैं. हमने अभी देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = mc both are equal. Equation 2 and equation 3 are going to be equal. If I equate both these two equations, mac = mv²/r, m and m will be cancelled out and ac = v²/r. तो दैट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि आप लोग पहले भी ड्राइव कर चुके हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ ac is v²/r. v is the velocity which is uniform velocity and r is the radius of the circular track और r जो हमारे पास है that is equals to L/2. Now guys, AC is v²/r. Now we will determine the linear speed of the laboratory in one rotation of the laboratory. We know that the distance covered is equals to the circumference of that track and the circumference is basically 2 pi r. The time required is the time period, capital T, and the velocity is going to be v2 pi r over t. That is relationship we have derived over here. V is 2 pi r over t. T is the time period. Now we are going to place this value of velocity in our equation that is ac is v²/r. That becomes 2 pi r over t whole square over r. We take the square, that becomes 4 pi square r square over t square over r. R and square will be cancelled out. The final relationship is going to be 4 pi square r over t square. Now we know that the frequency and time period are inverse of each other. Frequency और time period एक दूसरे के inverse होते हैं. F is 1/t. So 1/t square is going to be f square. So AC is going to be 4 pi square r into f square.
तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी देन 4 पाई आर स्क्वायर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ओवर 4 पाई स्क्वायर आर. So if we take a square root on both sides, f equals to radical AC over 4 pi square r. Now 1 over 4 pi square under root is 1 over 2 pi radical AC over r. Now the centripetal acceleration that we want to produce in the satellite is gravitation acceleration. So we replace AC by g, and the r we know that the radius of that circular track of the satellite. The final relationship is going to be 1 upon 2 pi radical g over r, and g is the gravitation constant, gravitation acceleration. We know the value is 9.8 and r is the radius. अगर हम उस radius की value 10 लें, we're going to put the value and we can get the frequency of the satellite. ये frequency वो frequency है जिसमें आपने उसको कितनी बार rotate करना है ताकि आपके पास gravitation acceleration वहाँ पे produce हो सके. So this is the final relation for the frequency, that is 1 over 2 pi radical g over r. My students, एग्जाम में आपसे यही डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आती है और आपने इसको ड्राइव करना है. एंड दिस इज़ द होल प्रोसीजर दैट आई हैव टॉट यू इन दिस लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड यू कैन easily derive the value for the frequency for the satellite to attain the gravitation acceleration value inside the satellite. Thank you very much for watching the video.